very much, madam, and I am very proud to share the one thing before starting this, that National Health Mission of our Indian government at two places, Karnataka and Tamil Nadu, they have accepted Justice score as a part and parcel of routine antenatal screening. And even both of these states, they have made compulsory that even all private practitioners also should do it. And even they have gone further ahead and they have said that 75 milligram aspirin at bedtime and calcium 500 milligram BD with low carb diet. So all the recommendations what we all suggest, they all are accepted. And because these two states have little higher maternal mortality than other states, so they have accepted these things and already the things are in pipeline. So thank you very much, madam, for all the blessings and all of you for making this score popular. There is nothing personal and we have given this in the service of nation, that too free of cost. And even now we all can download it or we all can directly go on the website by any phone, iPhone, laptop, Android, anything. www.hdpjustosiscore.com. So directly it starts, no single penny is to be given. So thank you very much once again, the Gynac Forum, for inviting me in these prestigious sessions every monthly on 19th. And today, Madam has suggested me to talk on my male infertility. And mainly what I'm going to cover is all the aspects I'm trying to cover of male infertility. That, see, when we sit day to day in the OPD, we find out right now we are finding that maximum number of the patients, they are of male infertility and mixed causes than the previous one, female infertility was on high. I practice at very different places. One where I stay, that is Islampur, which is a very deep rural part of the Maharashtra, where I have my almost 70% of the infertility practice. While at another place, the metros like Kolhapur and Pune, where I practice on weekly basis, but there I get different types of patients and their maximum number of patients of infertility sector are from male infertility. And that is something, yes, it is directly, it correlates with their work pattern, with their behavioral and lifestyle changes, as well as their habits, as well as their addictions, their age of marriage, and all types of economical strata problems and etc. Even I'm writing a Marathi book on that, and that is actually, when during the course of discussion, we all will get to that. But I am finding more and more sexual dysfunctions in those strata of patients, especially the metros and all. Everybody may get surprised, but yes, these problems are more in metros than in the rural part of the India. Now we will see, though the lecture is male infertility, we'll use the word little milder, that is subfertility. The first and foremost thing, when we see exactly if we differentiate the causes of the male infertility, number one, they are because of either absolutely azoospermia, second, oligoasthenospermia, and third, inability to perform, and fourth are the genetic causes because of which the nature is not giving baby to them. Either it is continuously aborting or creating the blighted ovums, missed abortions, or it is not at all making that woman fertile. So these four categories are main one. Now let us start one by one. Here in this figure, I have tried
to summarize all the causes of the severe oligoasthenospermia. So first we'll see that, and then we'll come to know ki Baba how to treat or how to go ahead with the diagnosis of the azoospermia patients as well as severe oligoasthenospermia patients. Because IUI with husband semen or IVF using husband semen, ICSI and all are not the treatments ki Baba they have the 100% answer. So when we see the highest number of causes for the severe oligoasthenospermia are congenital. Second, there are problems in the seminal tract. Testicular causes are 6.5%. Genetic causes again 7.8%. Secondary hypogonadism, again that we are seeing, and especially because I'm a male infertility practitioner in this area, so certain such patients, even by gynecologists or infertilologists, they are seen. So maybe that's why I am seeing more and more patients. But yes, secondary hypogonadism in 1.3% cases and sexual dysfunctions are on high rise. They are here we have shown, this is a standard data on almost 1,737 patients, but this is 4.4%. But if we compare and add the data from the metros, then it may go up to even 10% of the patients. Many instances, we are very much worried about the oncological problems, but in males, it's only 4 to 5%. It is not that much common, leading to severe oligoastheno, leading to infertility. So otherwise, I am not denying that male CAs are more. I am not denying that, but I am saying that in this infertility or subfertility evaluation, when we assess the patient, in them, the oncological problems are 4 to 5%. Now, when a patient comes in front of us, a couple comes, ideally, again, Madam will to always, Madam says that not only infertility, but with all patients, we should sit, we should give some time to them. At first visit, this visit is very important, where we are discussing thoroughly with them. In our clinic, we have some questionnaires which are in Marathi because I practice maximum. My 99.99% patients are pure Marathi patients because I am in deep Maharashtra. So we have prepared them in Marathi, where we ask them in detail about their sexual history as well. In detail, we ask each and everything. Means the family history, even it is in detail. माने it is not कि आपके फैमिली में कुछ है क्या? No, it is not like that. माने it will be asked in proper way कि आपकी मम्मी, पापा, मौसी, मौसा, मामा, then auntie, all uncles, then even grandmother, grandfather from this side, from that side. So we ask them. If they are in suspicion, then they can go back and the next visit they will tell us कि सर वो भूल गया था इतने इतने जन को इतना इतना कुछ है. So we do even that analysis as well. So in detail, the history is taken. When I am talking about sexual history, we talk in detail. Right from कि desire आपका कैसा है, माने आपको desire होता है क्या? It is not a question. Nobody will say कि मुझे नहीं होता. But there are certain ideas. The counselors, myself, my wife, we all sit with them and we ask them about in detail about desire. Even person-specific desire is also asked because even we have found out that there is person-specific desire because that is not, today is not my topic is sexual dysfunction, so I will not go in much detail. But even those things are asked. Even about the ejaculation problems in proper direction. Even madam, we ask about in detail about the coitus. Even the number of thrusts are asked.
somebody may laugh कि अरे क्या, हाँ, yes, they may not tell कि exactly 10, oh, we are not expecting that. But with that question, many of the wives, they have said that, कि sir, I do not get satisfaction because as soon as he enters, there is a fall. So many things, they come up if we ask them in a direct way. Of course, the language is very sober. There are certain techniques to ask this question. Couple is there. So even when we sit together, when my wife is also gynecologist, if she is not there, then still a counselor, lady counselor, she sits with me. If she is not there, a senior sister, she sits with me. So the couple asks the questions to the couple. So there is a good scenario, good atmosphere is created, and then all these things are asked. After that, we gain the confidence with our patients, and then immediately it is been told to them, and we tell them, कि बाबा see, 30% causes are from the male, 30% causes are from the female, and 20% are the mixed. So that means we can say कि 50-50 आपका है. So it is better that on the first visit itself, please have the semen analysis. मैंने आज पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, लेकिन आपका इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर ये डिसाइड होगा कि फीमेल को, आपकी वाइफ को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना है कि नहीं है. एंड यूर टेस्ट इज लिटिल चीपर. हमारे यहाँ पे एट माई क्लिनिक वी डू सीमेन एनालिसिस इन 500 रुपीज़. अगर स्पर्म फंक्शन टेस्ट वगैरह एक्स्ट्रा कुछ करना है या कासा वगैरह यूज करना है तो दैट इज डन इज अ पार्ट 2. बट स्क्रीनिंग सीमेन एनालिसिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर फैसिलिटी मैडम वी आर प्रोवाइडिंग कि उन्हें तुरंत वो सीमेन दिखाया जाता है. व्हेन वी शो द सीमेन स्लाइड, दे कैन सी डायरेक्टली ऑन द माइक्रोस्कोप और ऑन द स्क्रीन, और उन्हें दिखाया जाता है कि व्हाट इज स्पर्म, किस प्रकार से आपके स्पर्म दिखते हैं. उसके पहले वी हैव so many charts. I'm just tilting my laptop, probably you may not see, but okay, fine. I am sitting today right now in my consulting where there are so many charts. Even in my whole clinic is full of so many charts. So they already have gone through those. So they know how a sperm look like. And we show them. So semen analysis, we tell them. Again, we are using WHO-5, the newer classification. So I am not going in much detail because we all know what is what. So depending upon right side में उसे लिखा जाता है, and taking that, we analyze that semen sample. pH paper, everything has been used in a proper way, and then it is done. There is a question कि क्या कितने दिन का गैप होना चाहिए etc. Ideally ऐसा कुछ नहीं है. वो WHO की जब 5 नंबर आया तो उस टाइम उन्होंने लिखा था कि हाउ दे हैव डन इट. लेकिन इफ यू गो इन डिटेल्स, मेनी टाइम्स वी आस्क कि नहीं बस 24-48 आवर्स का भी गैप है तो भी दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम. हाँ, अगर ज़्यादा गैप है तो वी मे फाइंड एबनॉर्मल एज वेल एज इमोटाइल एज वेल एज क्लम्स एंड ऑल. सो वी से कि इट इज बेटर टू हैव द गैप ऑफ 3 to 4 days. That is sufficient, not more than that. If it is lesser, no problem, we will mention on the report कि बाबा सिर्फ 1 या 2 दिन का गैप है. बट अदरवाइज ऐसे कुछ रिकमेंडेशन नहीं है कि इतने दिन का गैप हो फ्रॉम द लास्ट either a coitus or a masturbation or a fall till the semen analysis. Now if the semen parameters are normal, then we tell them कि अरे चलो अच्छा है, बट वी नेवर से कि अभी उनमें प्रॉब्लम है. वी से दैट कि ओके ठीक है आपका अच्छा है, नाउ लेट अस एनालाइज है एंड बाद में देखते हैं. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम एबनॉर्मल, देन वी डू नॉट टेल देम कि इट इज एबनॉर्मल. वी एट द फर्स्ट विजिट वी हैव टोल्ड देम दैट कि अगर आप बोलोगे कि आप माई मी आई क्यों कर रहे हो, बिकॉज मैडम ने स्पेसिफिकली बोला है कि डॉक्टर गोरख आज आपको बोलना है व्हाट आर यूर प्रोटोकॉल्स, बिकॉज वी ऑल नो कि व्हाट इज स्टैंडर्ड, वी ऑल नो व्हाट इज रिटन इन द रिकमेंडेशंस,
many are following also. But मैडम has specifically given me instructions that कि आप ये बोलो कि आप क्या फॉलो करते हो. सो मैं इसलिए इस प्रकार से आपसे बात कर रहा हूँ. तो पहले ही विजिट पे हमने उन्हें बोला रहता है कि अगर आपका रिपोर्ट थोड़ा सा इधर उधर आ जाए तो दैट इज नॉट अ फाइनल रिपोर्ट. हम 15 दिन बाद या 1 महीने बाद वापस आपका सीमेन रिपोर्ट करेंगे. मैडम वी डू द सेकंड रिपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट लैब. मैंने सो दैट मैंने इनफैक्ट वो एक रिपोर्ट अगर एबनॉर्मल आ जाता है, माई एम्ब्रियोलॉजिस्ट ही डज इट, तो बाद में वापस रिपोर्ट जब करेंगे तो इट विल बी ऑन अ डिफरेंट ओकेजन फ्रॉम अ डिफरेंट लैब, but the same circumstances will be there. One is the proper message of the abstinence, etc., the cleaning and all, it is been given. So then they get a correct thing कि अरे ओके, दो लोगों ने दो डिफरेंट टाइम पे देखा हुआ रिपोर्ट, दोनों ने बोला है कि एबनॉर्मल है. देन वो देखने के बाद देन वी डिसाइड कि अभी इसका क्या करना है. Now the report has come in front of us and that report is azospermia. So एक बार azospermia देखा, दो बार azospermia देखा, दो different लोगों ने, that means there is a problem. So we all know कि either there is a obstruction in the passage or there is problem in the production. यही चीजें हैं, बाकी there is no problem. तो ये प्रोडक्शन का जो प्रॉब्लम है, either it is not happening या हो रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है. So all these things are there. So then we have prepared andro panel. We call it as andro panel, जिसमें हम FSH, LH, testosterone, then complete blood count, then TSH, then then prolactin and डायबिटिक का पूरा प्रोफाइल माने BSL फास्टिंग PP ये सब किया जाता है. मैडम आश्चर्य की ये बात है, जितने भी सीवियर ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया मिले, जितने भी अज़ोस्पर्मिया मिले, उनमें से 30 to 40% पेशेंट्स आर डायबिटिक. माने दैट इज व्हाट वी आर फाइंडिंग. और फिर ऐसे भी हुआ है मैडम कि ये सीमेन किया हमने और वही दैट वाज द ओनली थिंग कि वहां से उनका डायबिटीज पता चला. तब तक उन्हें मालूम भी नहीं था और सीवियर डायबिटीज पेशेंट मिले हैं. माने दैट मच इग्नोरेंस इज देयर इन दिस यंग पॉपुलेशन अबाउट देयर डायबिटिक प्रोफाइल. माने ये कहने की वाली बात है. आई एम नॉट सेइंग कि हर एक जगह ऐसा होगा, बट दिस इज एनालिसिस व्हाट आई एम कीपिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सिंपल थिंग मैं उन्हें पहले दिन पे बोल देता हूं कि देखो, अगर ये FSH LH जो है ये अगर बहुत ही बढ़े हुए आए तो मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा विद मेडिसिन एंड ऑल. लेकिन अगर ये FSH LH कम आए तो मैं कुछ मदद कर सकता हूं, बिकॉज यू आर अ केस ऑफ हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म. तो शायद इनके इंजेक्शन, गोलियां, आपको एक्सरसाइज वगैरह वगैरह करके मैं इन्हें बढ़ा पाऊंगा. टेस्टोस्टेरोन को भी ऐसा ही है. अगर ये बहुत ही बढ़ा हुआ आया, टेस्टिकुलर फेल्योर ही आया, तो मैं कुछ मदद शायद नहीं कर पाऊंगा बाय यूजिंग योर ओन स्पर्म्स. लेकिन अगर ये कम आया तो कुछ कर सकता. TSH और प्रोलैक्टिन, उसके बारे में उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग किया जाता है. अनलेस अंटिल वी डू द काउंसलिंग वी डू नॉट टेक द ब्लड सैंपल. उन्हें बोला जाता है कि अगर कुछ ये ऊपर नीचे आता है तो चिंता की बात नहीं है, इसे मेडिसिन है और ये मेडिसिन से सब सही हो जाएगा. सो डोंट वरी. अबाउट डायबिटीज वी टेल देम कि अगर इसमें से थोड़ा गड़बड़ी निकला तो तुरंत 48 आवर्स के बाद आपको आना है. पूरा फिर आपका कोलेस्टेरॉल, लिपिड प्रोफाइल, क्रिएटिनिन, एवरीथिंग विल बी डन एंड यू विल बी रेफर टू द फिजिशियन. सो थोड़ा सा ये आपको करना पड़ेगा. Now when we all know FSH LH are high, very high, there is a problem. If there is no history of testicular injury, probably we may have to go for karyotyping. कुछ autoimmune disease रहेगा. Otherwise, most of the time, you know, it is a primary testicular failure or it is secondary testicular failure, and probably we may have to go by using
the donor sperms. Usually in maximum of the cases, ऐसे such cases में definitely there will be smaller testicular volume. We have, madam, patients where even that much testosterone was high in one case, and FSH were high, and testosterone was also high. Okay, and again he has a bigger testis, and we find out there was some tumor. It was not seminoma, but there was some problem. And then with urological all those things, we could remove that. But later on, the patient had to go for donor. Second, in many cases, FSH will be very high and testosterone will be very, very low. In many patients, we have found out even they do not have all those secondary sexual characters in a proper way. I am not saying absent, but it was not in a proper way. Many patients are there. And then typically in history itself, patient has told, couple has told that there is a problem with the sexual acts, the erectile dysfunctions and many things. 3 patients, I remember, even their voice was, he was talking in that way. He was not talking in a proper way. And all those things also we have observed. So these things, we have to be very careful while dealing with such patients because we have to correlate all those things. FSH low, hypogonadotropic hypogonadal patients, very easy to treat because we have the gonadotropin therapy in our hand. We can directly use HMGs or FSH or even HCG or even the anastrozole, letrozole or clomipene citrate, and we have some hopes in our hands. So that is why I always tell those patients कि जब आपने एंड्रोपेनिल दिया है तो प्रे टू द गॉड कि बहुत कुछ कम आ जाए. नॉर्मल आए तो भी अटकोगे और ज्यादा आया तो पूरा का पूरा अटकोगे. सो माने तो थोड़ा सा उनका माइंडसेट भी प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है. थर्ड थिंग, reports all are normal and patients now again, madam, next to diabetes, we are finding the patients of hypogonadotropic hypogonadism, but third category of patients are hypothyroid patients. Again, when I was talking about hypothyroidism in pregnancy, I uttered that we are bounded by 4 directions with the sugarcane industries. And in my area, मेरे गांव से, छोटा है गांव ये 1 लाख पॉपुलेशन का, ये गांव के आजू बाजू में मैडम वी हैव 8 शुगर केन इंडस्ट्रीज एंड देयर आर 3 रिवर्स जिनमें ये उनका सब जा रहा है. माने तो वी कैन अंडरस्टैंड. एंड अगेन इट इज द शुगर केन प्रोडक्ट्स, हाइड्रोकार्बन्स which are going in the river waters, they are causing more hypothyroidism, they are causing subfertility, they are causing pregnancy hypothyroidism, and that is havoc, that is a very bad situation. Even in Delhi there are certain reports, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन yes, तो इनमें yes we can reverse it by treating that hypothyroidism. Again I used the word can, I will use the word may, we may reverse it. Again high prolactin patients, yes, अभी जो वर्क प्रेशर वाले जितने भी जॉब्स हैं, मैडम वी आर डूइंग वन ब्यूटीफुल सोशोलॉजिकल स्टडी जिसमें हम ऐसे कैटेगराइज कर रहे हैं कि द प्रोफेशंस विथ मेंटल प्रेशर और जिन्हें टारगेट ओरिएंटेड जॉब है जिनका, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है. आज सुबह सुबह अभी एक पेशेंट आके गया, ही वाज टेलिंग मी कि सर मैं ISO का कुछ वो करता है तो मुझे बहुत प्रेशर है एंड आई नो दैट आई एम अनएबल टू परफॉर्म, दैट इज द रीजन मैं जॉब छोड़ नहीं सकता, क्या करूं. लाइकवाइज मैंने नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग. थर्ड कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी अलग ही तरह की होती है जिनमें ऑल रिमेनिंग हार्मोन्स दे मे कम नॉर्मल, खाली LH इज हाई and even the testosterone is high, and these are very bad patients. So these are patients classical of androgen insensitivity. So इनमें भी प्रॉब्लम है. हार्मफुल एक्सपोजर मेडिकेशन वाले पेशेंट्स है मैडम. एक पेशेंट था, हम बात करते गए और बाद में पता चला
कि ही वॉज वर्किंग विथ, जहां पे फिनेस्टराइड और फ्लूटामाइड जहां पे प्रोडक्शन होता है, वो एग्जैक्टली ही वॉज वर्किंग इन दैट यूनिट। और वो बोला कि सर एक मुझसे बात शेयर करनी है, और ये है सर कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट के हम जो 10-12 लोग हैं ना, हम सब लोगों को वी आर अनएबल टू परफॉर्म, सब लोग। मैडम मैं यहाँ पे अभी भगवान के नीचे बैठा हूँ तो झूठ नहीं बोलूंगा, आई वेंट इन टू द डिटेल्स। फिर मैं वो कंपनी के पास आई रोट द लेटर, और फिर मैंने उन सबको जॉब चेंज करके दिया, मैंने उसी कंपनी में, कि बाबा इन लोगों को बच्चा नहीं है तो ये लोगों का, देन आई शोड देम दैट इवन लॉ। और ये फिर ऐसे हुआ कि इनका शिफ्ट चेंज करना होता है, मैंने विभाग भी चेंज करना होता है, सेक्शन, कि कई महीनों के बाद यहाँ से उनको वहां पे ले जाए, यहाँ से यहाँ पे लिया जाए। मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा, बट दे लिसन टू मी, एंड फॉर्चुनेटली 2 ऑफ देम दे केम टू मी, दोनों को बच्चा हुआ, तो उनका सेक्शन चेंज करना पड़ा, मैंने दैट हैज आल्सो हैपेंड। तो आई एम नॉट सेइंग कि दोस वेयर द क्लासिक केसेस ऑफ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, बट मे बी इट वाज अ इनिशियल थिंग एंड यस इट कैन हैपन। सो अभी ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल चीज बोल दूंगा। हिस्ट्री पे बहुत सारा हमें पता चलता है क्या होना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज मैक्सिमम इज स्ट्रेस, सेकेंड इज डायबिटीज, थर्ड इज hypogonadotrophic hypogonadism, fourth is chemical exposure, again I am reframing all those things, next is genetic, और उसके बाद बाकी के causes आ जाते हैं। Now we all should know these are certain medicines, we should ask the history of them, क्योंकि these are the drug which directly cause a problem on spermatogenesis। मैडम बहुत सारे पेशेंट्स मुझे एंटी कन्वर्जन्स पे मिले, बहुत सारे पेशेंट मुझे एंटी डिप्रेशंस पे मिले, कि जिनमें ये सीवियर ओलिगोएस्थिनोस्पर्मिया, इवन अजोस्पर्मिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन द पेशेंट्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मैक्सिमम आर ऑन एंटी हाइपरटेंसिव्स, मैंने हाइपरटेंशन इटसेल्फ वन ऑफ द कॉज फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बट मैं आगे जाके बोलूंगा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, सर्टन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, they are also one of the cause for erectile dysfunction. So we have to be very careful. Purposefully, I am giving this chart to you. Those who are on leupride, goserelin for many other things, they have suppression of gonadotropins, androgens for some reason. मैडम एक पेशेंट था जो एलोपेशिया के लिए वो मेडिसिन ले रहा था, एंड वी फाउंड आउट दैट कि अरे वो बंद करो, एंड ये बंद करने के बाद डिजायर अच्छा हुआ, लिबिडो का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, एंड वी कुड गिव हर बेबी, वो उसके वाइफ को। दोज हु आर ऑन एंटी एंड्रोजेंस, अगेन इट डायरेक्टली कॉज द टेस्टोस्टेरोन बायोसिंथेसिस इनिबिशन, और इवन इट हैज सर्टेन इफेक्ट्स ऑन टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग। 5-alpha reductase inhibitors, I gave you the example of finasteride and dutasteride, I already told you, that is causing the inhibition of DHT synthesis from testosterone, which is a final step in the conversion of the testosterone from cholesterol. Opiates, estrogens, again these lavender bath oils, they are very dangerous because they are causing suppression of gonadotropins. And nowadays males are also using all those things. Those who are on antipsychotics, there is elevation of prolactin, and that prolactin not only reduces the desire, but it leads to the suppression of gonadotropins. So male में भी hyperprolactinemia, it is very important. So ये हम लोग देखते हैं। There are many patients of who are on asthma, so इनमें भी जो बहुत सारे लॉन्ग टर्म प्रेडनिसोलोन डेक्सा पे है, देयर इज डायरेक्टली सप्रेशन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, सो दैट अस्थमा हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेनी मेल्स वी आर फाइंडिंग दैट ये कीमो वाले खुद ब खुद बताते हैं कि बाबा ये हमारा कीमो हुआ है, या उनका पिताजी आके चुपचाप बाद में बोलता है कि हमारा कीमो हुआ है, दिस इज अ प्रॉब्लम,
दैट इज डिफरेंट स्टोरी, वो कुछ छुपाते नहीं. But we have to keep. So I have shown here. Again, do you know these tetrahydrocannabinoids, the cannabinoids, they directly cause a problem on the motility. So ये भी सबसे important है. So all these medication का history very important. Genetic testing. Now it is the era of genetic diagnosis. I am attached with Green Array Lab, which is in Pune, where I do the clinical interpretation of these reports of the genetic testing, and I discuss further, not with the patients but with their doctors, कि बाबा आपके पेशेंट को क्या है और क्या करना चाहिए आगे जाके. I will purposefully lead because this is a summary from our discussion with our geneticists. So genetic testing is indicated in all cases of non-obstructive azoospermia, as well as in cases where sperm densities are found to be below 5 million. That means severe oligoasthenia. It is reasonable in men with elevated FSH and LH and small testes to exclude the mosaic-like case with karyotype, which affects around 7% to 10% of the men with Klinefelter. This diagnosis is important for both management of infertility and for the man long term, as case increases the risk of certain conditions such as diabetes. Even a routine karyotype will also diagnose chromosomal translocations, which can be present in up to 10% of the men with severe oligo. Here I will tell you my experience. Madam, we are finding problems in 16 number chromosome, deletions in 16 number chromosome, trisomy in 16 number of chromosomes, and that is in males, and that is directly causing recurrent missed abortions. So that is a problem. So that means karyotyping in males where we are suspecting कि बाबा सब causes are ruled out in cases of missed abortions, कुछ नहीं मिल रहा है, but prima facie semen analysis अच्छा लग रहा है. No, probably there is some chromosome problem. So that also we have to keep in our mind. And of course, those men where we are detecting agenesis of Vasa and all, there we are doing also CFTR mutations, but again, that is experimental because when there is nothing, we have to go ahead with the donor and etc. Lastly, 10% of the men with sperm concentrations of less than 5 will have detectable micro deletions in their Y chromosome. So yes, to see that AZM, AZT and all those Y chromosome analysis, Y chromosome deletion and Y chromosome studies, they are to be done because these mutations will be transmitted to any viable male offspring. So genetic counseling is mandatory in this situation. फिर आप बोलोगे कि हमें इसका समरी बताओ, तो समरी सिंपल है. Severe oligoasthenospermia which is not getting response to at least 60 to 90 days of antioxidant therapy or hormonal therapy or the lifestyle changes and all, please do the genetic counseling. We have to do the genetic testing in the form of routine karyotyping and Y chromosome deletions. Y chromosome deletions. These are very important things. That is the summary of this genetic testing slide. Now lastly coming to the कि बाबा एक बार हमने तय कर लिया कि दिस इज अ प्रॉब्लम, देन हाउ टू गो अहेड. नाउ नंबर वन पेशेंट्स, तो उनमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रेस. मैं क्या करता हूँ मैडम, मैंने खुद इसलिए योगा की ट्रेनिंग ले ली है. मैंने योग विद्या धाम नासिक, यहाँ पे मैं खुद एक प्यूपिल रहा और ऑनलाइन कोर्सेज, यहाँ पे जितनी भी ऑफलाइन कोर्सेज अटेंड करके आई हैव अंडरस्टूड कि बाबा विच आसनास आर टू बी डन एंड दोज आसनास दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल जो आसनास है योगासना कि वो करके भी डेफिनेटली मेनी थिंग्स दे कैन बी रिवर्स्ड, लाइक स्पर्म मोटिलिटी. देन अगर स्पर्म काउंट है वो बहुत सारी अलॉन्ग विथ मेनी थिंग्स, आई एम नॉट क्लेमिंग कि सिर्फ योगासना से, बट along with lifestyle changes, yes they do.
कौन से आसनास है? सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य नमस्कार। तो उससे यस। तो मेरे जितने भी मेल ऑलिगोस्पर्मिक है, आई टेल देम टू गो फॉर सूर्य नमस्कार। आई टीच देम पर्सनली हाउ टू पुट इट इवन इन माई क्लिनिक। उसके बाद वो करेंगे। दे आर सपोज टू पिंग ऑन मोबाइल कि हाँ आज हमने कर दिया, दोनों ने कर दिया, कितने किए उनको लिखना है, वो एक नंबर पे भेज देते हैं। तो दैट मीन्स आई नो ये कंसिस्टेंटली हो रहा है। सेकेंड थिंग, उनके डाइट में जितना भी ज़्यादा ये नमकीन चीज़ें हैं, मसाले वाले पदार्थ एंड ऑल, वो पूरा माने हम उन्हें सात्विक डाइट फॉलो करना पसंद करेंगे। हरी सब्जियाँ, जितने भी अपने प्रोटीन वाले दाल एंड ऑल, वी टेल देम। जो एगेटेरियन है उनके लिए एग्स, नॉट ओनली एग वाइट, साथ साथ एक्सरसाइज। देन मैडम वी हैव फाउंड आउट दैट, माने बिकॉज यू सेड कि आप आपके प्रोटोकॉल बताओ, तो मैं बता रहा हूँ। 2 आलमंड्स डेली, वो भिगाना वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। एंड देन जवस, जवस को हम बोलेंगे फ्लैक्सीड्स। तो दीज आर फ्लैक्सीड्स। तो फ्लैक्सीड्स का 1 चम्मच मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बोला, बड़ी सौंफ। तो ये बड़ी सौंफ और ये 1 चम्मच जवस, 2 बादाम और 12 सूर्य नमस्कार। एंड बाद में जितने भी मैंने डाइट के बोले। एंड लास्ट थिंग वी टेल देम about the sleep. We discuss them about sleep a lot, and maximum number of the patients of mild to moderate oligospermia or severe oligospermia, they are being transformed. Because sleep is very important, and that's why I like a drug in melatonin, like anything. Though I am not using as in the doses as those psychologists use or psychiatrists used, but 2 to 3 मिलीग्राम डेली दिस मेलाटोनिन अगर ये दे दिया हमने और 1 महीने तक उनको अच्छी तरह से नींद आ गई, तो डेफिनेटली इट हैज इम्प्रूव नॉट ओनली द काउंट बट द मोटिलिटी एंड देयर परफॉर्मेंस एज वेल। ओनली थिंग आई टेल देम कि एक बार आपने मेलाटोनिन खाया कि उसके बाद आपको मोबाइल नहीं देखना है। बिकॉज आई टेल देम कि अगर आपने मेलाटोनिन खाया और मोबाइल देखा तो वो ब्राइटनेस से फिर आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। थोड़ा सा डर पैदा करता हूँ, थोड़ा सा झूठ मूठ बोलना पड़ता है, एज कृष्णा हैज सेड। लेकिन उससे फायदा ये होता है कि उसके बाद मैंने 10 के बाद उनका मोबाइल अननेसेसरी उनका जो वेकअप रहना है, ऑल दीज थिंग्स वो करेक्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेशेंट्स along with these changes and antioxidants। अभी फिर आप बोलोगे कि एंटीऑक्सीडेंट का क्या, आप तो किसी गाइडलाइन कोई बोलता नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। दे आर सेइंग दैट कि व्हेन देयर आर लॉस, तो वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोडक्ट्स है वहां तो देना पड़ेगा। यस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड ऑल दे आर इंडिकेटेड। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, द डोज ऑफ कोएंजाइम Q10 इन मेल्स इज 100 मिलीग्राम BD, उतना तो मिनिमम देना पड़ेगा, नंबर 1। एंड मिनिमम 60 डेज 70 डेज देना पड़ेगा, तभी उसका कुछ ना कुछ थोड़ा सा इफेक्ट हम देख पाएंगे। बट सिर्फ ये गोलियां दे दी और हो गया, ऐसे नहीं होगा। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज और जो मैंने बोला अबाउट देयर डाइट पैटर्न, स्लीप पैटर्न, एवरीथिंग इफ वी चेंज, definitely it improves. Again, I will tell you, in Sanskrit, what we call the semen as, we call it as a वीर्य। तो I have gone कि why उसे वीर्य बोला जाता है। तो I have seen even in all these Ayurvedic संहितास, they say that ये परिपाक है पूरे मेलनेस का, माने देसी like that, means ये it is something extreme कि जब बाहर आ जाता है तो इसलिए वो वीर्य रस एंड ऑल माने दे हैव कनेक्टेड। सो आई रेड इन डेप्थ एंड देन आई फाउंड आउट दैट कि ये पूरी तरह से जो अच्छा ये सब बर्ताव करेगा, इट गिव्स द गुड इफेक्ट्स। इवन मैडम इन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जब हम हमारे नोवैक्स में या सब गाइडलाइंस में लिखते हैं TLC, टेंडर लिविंग केयर इज द लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट इज बीन रिटन देयर इन द बुक्स। So it is the tender loving care, उनका सब ये कन्वर्ट करना। सेकेंड,
लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बार कंफर्म है कि FSH LH आर वेरी हाई, कुछ नहीं कर पाएंगे, testis is smaller, we'll discuss with them about the donor option as per the ART Act, प्रॉपर उनके कंसेंट्स लेने हैं और उसके तहत either donor IUI or IVF using the donor semen, depending upon the age of marriage, depending upon कब चाहिए बेबी, कितना नेसेसिटी है, कितना अर्जेंसी है, व्हाट इज द एज ऑफ द मेल फीमेल, सब देख के वी डिसाइड। अगर किसी ने पूछा कि AID के आप कितने ट्रायल दोगे, तो मैं मेरे क्लिनिक में आई टेल देम कि 1 और 2 एक बार करके देखते हैं, क्योंकि अगर आपकी नलिया खुली है एंड इफ इट इज अ प्योर मेल फैक्टर और फीमेल का अगर चिंटू पिंटू फैक्टर है, छोटा फैक्टर है, तो उसमें डेफिनेटली वी कैन ट्राई विद AIDs, क्योंकि आपका पैसा बच जाएगा। तो गिव मी 2 months, 2 महीने में आप अच्छी तरह से खुद को प्रिपेयर करो, कम बैक टू अस, विल डू 2 AIDs, उसमें अगर हुआ फाइन, अदरवाइज विल गो फॉर IVF यूजिंग दैट थर्ड डोनर सैंपल। सेकंड लोग जो आएंगे जिनका मैंने बोला हाइपोथायराइड, हाइपरप्रोलैक्टेमिक, वहाँ पे भी एक्सरसाइज, डाइट पैटर्न, एंटी थायराइड ड्रग्स डिपेंडिंग अपॉन, अगर हाइपर है तो, हाइपो है तो हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन अच्छी तरह से। हियर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्रोमोक्रिप्टिन, यूजुअली आई गिव कैबरगोलिन, हियर अगेन कैबरगोलिन भी लिखा है, बट कैबरगोलिन भी मैं देता हूँ, एंड फिर कैबरगोलिन along with pyridoxine high doses for 1 month 10 milligram daily, तो इससे ये थोड़ा सा we get a good help। जिन जिन पेशेंट्स का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है। मैडम एक सिंपल टेस्ट में बोल देता हूँ, इवन क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है कि इनका साइकोलॉजिकल होता है, तो जो पेपर टेस्ट है मैं इनको बोलता हूँ कि वो पेपर पेनिस के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा वो देते जैसा लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक अगर वो फट जाता है दैट गिव्स अस आइडिया। अदरवाइज वी टेल द वाइफ्स कि बाबा आप वो उठने से पहले, माने जब सोते रहते हैं हस्बैंड आपके, अर्ली मॉर्निंग यू हैव टू सी द whether there is erection or not. If it is there, let us know. It is a performance anxiety or it is a anxiety related erectile dysfunction, and it is not a true case of erectile dysfunction। फिर वहाँ पे तो बहुत सारा अच्छा खासा ट्रीटमेंट है। सेकेंड, जहाँ यहाँ पे इवन वी कैन गो विद फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स लाइक सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, लेकिन उसमें भी मैं हाफ डोसेज अलॉन्ग विद लॉट ऑफ एडवाइस देता हूँ। सेकेंड है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स, उनको तो बहुत अच्छा खासा है कि बाबा अगर उन्हें परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है तो उन्हें सचिन तेंदुलकर वगैरह ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। सिंपल एग्जाम्पल है, उनको बोलना है कि सचिन जब 90 करता है तो 10 ओवर में करता था, लेकिन 90 से 100 करने के लिए उसे और 10 ओवर लगते थे। इट इज बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। बस वो छोड़ दो एंड बस सिक्सर लगा दो एंड ऑल। विद दिस गुड काउंसलिंग, so many talks and all, many patients improve। Otherwise we give them melatonin, अच्छी खासी नींद सुधारते हैं, and then along with phosphodiesterase inhibitors, then there are certain techniques कि जहाँ पे उन्हें बोला जाता है कि 6 घंटे पहले आप एक बार should do one masturbation, 6 या 8 घंटे पहले, and then after 6 to 8 months please go ahead with the intercourse so that ये time prolong हो जाता है, and then they get good desire, then good erection and even good time, and yes ये हो जाता है। थर्ड पेशेंट्स है जो जिनको ट्रूली हार्मोन्स लगेंगे, और वो पेशेंट्स है हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म पेशेंट्स। सिर्फ उन्हीं में ट्रू हार्मोन्स लगेंगे, बाकी फिर लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं हम तो नॉर्मल वालों को भी देते हैं तो उनमें हमें फायदा आया है, वी हैव गॉट बेनिफिट, नॉट रिकमेंडेड। आया है अच्छी बात है बट नॉट रिकमेंडेड। मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड दैट इट हैज बिकम बुमरैंग, कि हमने नॉर्मल को दिया, ये FSH LH इंजेक्टेबल दिया या क्लोमिपिन सेंट्रेट शुरू कर दिया, और बाद में पता चला कि अरे अभी कुछ नहीं आ रहा है, अच्छा खासा था, बाद में ये बंद हुआ। बिकॉज आई हैव शोन इन प्रीवियस स्लाइड्स कि यही मेडिकेशंस है जो दे आर दुधारी, माने यहाँ से अच्छे खासे पेशेंट को देंगे अच्छी बात है, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है उनको देंगे तो ये इट विल कॉज अ रिवर्स इफेक्ट। लास्ट, देयर आर पेशेंट्स ऑफ रेट्रोग्रेड एजुकेशन इजैकुलेशन, जिनमें वी हैव टू यूज अल्फा एंटागोनिस्ट,
like pseudoephedrine, etc. Yes, they are contraindicated in hypertension, but for these proven retrograde ejaculation patients, these are important. लास्टली मैं बोलूंगा कि हाइपोगोनेड हाइपोहाइपॉग में किस प्रकार से क्या यूज करें. क्या हम एचसीजी यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली. क्या हम एफएसएच यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली. क्या हम खाली एलएच यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली. बट खाली एलएच को मैं थोड़ा सा पीछे रखूंगा. इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इज एचसीजी और एचएमजी या प्योर एफएसएच के बारे में. whenever we are using FSH, in my practice, what I am using is 300 milligram in documented cases of hypo-hypo, 300 international units of HMG, और मैं उन्हें हर मंगलवार और शुक्रवार को देता हूँ ताकि वो ध्यान में रहे. माने ट्वाइस अ वीक, 6 हफ्ते के लिए दे देंगे. 6 हफ्ते बाद फिर उनका सीमेन एनालिसिस किया जाएगा, हार्मोनल एनालिसिस किया जाएगा, कोरिलेट किया जाएगा. यस, मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन माने मोर देन 40% अगर बढ़ रहा है ऑल पैरामीटर्स, वी मे कंटिन्यू along with side by side either IUI or IVF. What about HCG? HCG definitely I am using in my clinical practice. I am using 5000 international units once a week for at least 6 weeks. और जिनको ऐसे लगता है कि जो पेशेंट्स अच्छी तरह से ले लेंगे उन्हें we use 2500 international unit twice a week again for 6 weeks. 6 weeks के बाद वापस हम देख लेंगे. Somebody may ask कि क्या हम recombinant यूज कर सकते हैं? Definitely we can use recombinant as well. एक 6 हफ्ता वो 8 हफ्ता देके वापस देखना है कि are the parameters improving or not. If they are improving, fine. If they are not improving, please take patients for ART as early as possible. क्योंकि there are many patients we have seen, madam. Those are on ongoing failure. और जो ongoing failure वाले patients हैं उनमें वापस पूरा का पूरा सीवियर ओलिगोएस्टेनोस्पर्मिया का अजो हो जाता है. So that's why I think कि we have to be very timely in the interventions. So to summarize, these are the important causes we have to keep in our mind. One must be very much thorough in taking the history. Right from आप काम क्या करते हो? बहुत बार पेशेंट बोलता है मेरा बिजनेस है. मैंने बोला नहीं बिजनेस है, ठीक है, क्या है? फिर बोला चुपके से नहीं वो एक्चुअली सर वो पेस्टिसाइड्स का. मैंने बोला ठीक है बिजनेस हो तो क्या आप ऑफिस में हो? देन ही सेज नहीं नहीं, इवन आई हैज टू हैंडल एंड ऑल. सो सिर्फ बिजनेस बोल के कुछ होने वाला है नहीं. तो वी हैव टू बी वेरी टॉकेटिव, प्रोएक्टिव, बिकॉज दे हैव कम टू अस फॉर जस्टिस. सो इट इज आवर ड्यूटी. वी हैव टू सिट एंड वी हैव टू टॉक. फिर आप बोलोगे कि अरे एक पेशेंट के साथ कितना बैठेगा? मैं तो 20 मिनट बैठता हूँ मैडम. सुबह 9:30 बजे शुरू करता हूँ और 6 बजे खत्म करता हूँ. इतना तो बैठना ही है. अदरवाइज सिर्फ इनफर्टिलिटी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसी प्रकार से करनी चाहिए. नहीं तो मैं डिलीवरी भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, तो भी करूंगा. इट इज नॉट हैपनिंग. सेकेंड थिंग, हार्मोन एनालिसिस करने के बारे में वी हैव टू बी प्रोएक्टिव. लेकिन आधा कच्चा कुछ नहीं करना है. पूरा का पूरा हार्मोन प्रोफाइल अलॉन्ग विथ उनका हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपोथायराइड एंड हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया ये ध्यान में रख के पूरा का पूरा एक साथ करना है. वी शुड नॉट हेजिटेट टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन in case of sonography, in case of a opinion of a urologist or andrologist कि बाबा हमने इतना तक किया है, आगे का क्या करना है. And there are few patients which we have to send in for testicular biopsy, जहाँ पे हम ऑब्स्ट्रक्टिव कुछ अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो तो हमने छोड़ दिया लास्ट में, इसलिए कि जब हमें ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया का पेशेंट हम वी आर सस्पेक्टिंग, इन दोज पेशेंट्स वी हैव टू टेक द टेस्टिकुलर बायोप्सी. बट again here is a but. I said my embryologist along with that. मैंने यूजुअली हमारे यहाँ पे 3 ओटी है तो वो एक ओटी में आके वो करते हैं जो ART के तहत जो हमारे यहाँ पे एंड्रोलॉजिस्ट है वो सर्जन आके, तो उसी टाइम मीडिया लेके मेरा एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी साथ रहता है. बिकॉज अदरवाइज अभी बायोप्सी करेंगे फिर HP का रिपोर्ट आएगा तो वापस क्या करने वाले हैं? नो. सो एट द सेम टाइम
वी शुड बी रेडी विथ दी टेस्टिकुलर जो एक्सट्रैक्ट का जो मटेरियल मिला है उसे क्रायो प्रिजर्वेशन करने के लिए वी हैव टू बी रेडी, सो देन इट इज अ गुड थिंग। सो इसलिए उसके पहले टेसा टेसे और इक्सी का जो काउंसलिंग है वो भी करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट थिंग इज दीज आर द मेडिकेशंस कि वी शुड नो कि माय पेशेंट इज ऑन विच मेडिकेशंस, और उसके तहत फिर उसका क्या बंद करना है। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन पे है तो क्या कम करना है, चेंज ओवर करना है। एंटी हाइपरटेंसिव पे है, क्या चेंज ओवर करना है। एंटी कंसल्टेंट पे है, क्या चेंज ओवर करना है। अलॉन्ग विद दोज कंसल्टेंट्स वी हैव टू डिस्कस सी द इफेक्ट आफ्टर 70 to 80 days। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, इन मेल इनफर्टिलिटी हमें पेशेंस होना चाहिए, एंड इवन वी शुड डिस्कस दिस सेम विथ अवर पेशेंट्स एज वेल कि पेशेंस रखो, क्योंकि ना 60 या 70 डेज जब तक जाते नहीं ना कोई रिजल्ट आता नहीं। मिनिमम 70 डेज जाना चाहिए तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज इट इज नॉट लाइक दैट ये गोली खाई और 7 दिन में रिजल्ट आया और वो सब हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। मैं मैडम जी से तो बहुत बहुत आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हर। शी मेक्स मी टू रीड एंड टू ऑर्गेनाइज अ लॉट। होता यह है कि बहुत सारा क्लिनिक में करते हैं, लेकिन बिकॉज मैडम गिव्स मी ऑल दीज स्टिमुलेशंस तो ये पूरा ऑर्गेनाइज भी हो जाता है कि हमने क्या क्या काम किया है, उसका डेटा भी मैं ऑर्गेनाइज कर पाता हूँ एंड आई कुड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ हर। सो थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर इन्विटेशन, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड मंथली लिसनिंग एंड बेयरिंग मी। मैडम आज मेरा वो कैमरे को कुछ तो हुआ है तो मैं कुछ वो खोल नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए कोई बात नहीं राम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच मैडम। It had been a wonderful presentation of yours. Let's have comments. Shakuntala, start with you. Ji ma'am. Actually, as always, Dr. Gorakh, your talk was absolutely complete and in all the aspects you cover. See, Dr. Gorakh talked. What is he doing? Yeah. So that's why being a male infertility expert and IVF expert, and what he is doing for males, he has told, and that is what I wanted him to speak. Yes, Dr. Shakuntala. So there is nothing much that I can add on to your expert comments, sir. Only thing that we have a dedicated urologist available in our hospital. Great. But before referring him my patient, I do the hormonal profile as you highlighted, the diabetic profile, CBC. So that I know the baseline workup has been done, and then I refer my male member of the